Hi everyone. So before you watch this interview, I just want to make a note that go with the open mind, listen with the focus what Shukacharya Ji is saying. We are discussing about Sanatan Dharma, the importance of it, how it came. We also try to understand the different Vedangas and discuss the topics around it. At the end, he mentions the initiative that he has taken up, which is very beautiful and worth knowing it. And I really appreciate and congratulate and wish all the good luck on whatever Shukacharya Ji is trying to do for this world. I would again hope that you will watch this conversation and evolve yourself. Thank you guys. Enjoy this. Bye. Okay, thank you, Shukacharya ji. Thank you for joining this conversation. महादेव Namaste, Jai Mahadev. Thank you. महादेव और Yes, आपके समस्त दर्शकों को भी हमारा सस्नेह और सादर महादेव। Mahadev, Mahadev. Yes, and welcome once again to this talk show, Extreme Gratitude. आप ही अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे तो सही रहेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने जितना आपके बारे में हमारी बातचीत के थ्रू जाना है या फिर आपके वेबसाइट पे पढ़ा है, फिर भी मैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई लेट यू गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज। सर्वप्रथम तो अद्वैत जी आपका भी धन्यवाद है, यस, क्योंकि इस प्रकार से जो प्लेटफॉर्म होते हैं इसका एक सदुपयोग हो कि जहाँ पे इस प्रकार के जो विषय है ये हम लोगों तक पहुंचा सकें। राइट, और अनेक अनेक इस प्रकार के हम कार्य करते हैं, जैसे कि हम इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, हमारे जो यूट्यूब इत्यादि जो वीडियोस रहते हैं, उसमें भी ये भी एक प्रकार है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये विषय, ये बातें जो है सब लोगों तक पहुंच सकती हैं। राइट, तो सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों थैंक यू, को धन्यवाद। थैंक यू। हमारा जन्म लेस्टर में हुआ और इस प्रकार से जो एक नॉर्मल वैष्णव परिवार जो रहता है, और इसमें प्रभु कृपा रही, महादेव की कृपा रही कि जो हम ऑक्सीडेंटल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, आप राइट, वेस्टर्न एजुकेशन कह सकते हो, फॉर्मल एजुकेशन कह सकते हो, वो पूर्ण होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद फिर हम काशी आए। काशी में भगवान विश्वनाथ की, माँ अन्नपूर्णा की, माँ गंगा की के आशीर्वाद से वहाँ पे गुरु चरणों में, गुरु परंपरा में जिस प्रकार से जो हमारी शास्त्रीय पद्धति है, इसमें मुख्यतः तो संस्कृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, षड्वेदांग का ज्ञान, तो इस प्रकार की जो हमारे एक सिलेबस जो एक प्रकार से रहता है, इसका अध्ययन करने का सौभाग्य और सुअवसर गुरु चरणों में प्राप्त हुआ। तो वहाँ पे भी 4 वर्ष तक हमने इस प्रकार किया। उसके बाद जो हमारे एक व्यासाधारण होता है, तो वो व्यासासन इत्यादि, और उसके बाद इसी प्रकार से ये यात्रा चली है, जहाँ हितोपदेश, हितोपदेश इत्यादि। और आपने भी बताया था कि कुछ हमारे कुछ वीडियोस जो हैं, विशेष रूप से जो वेद, वेदांग इत्यादि के जो अभी भी बने हैं और कुछ बनने वाले हैं, तो इसमें भी लोगों तक इस प्रकार का एक जो हमारे वैदिक शैली, हमारे वेद की जो सभ्यता है, उसका कुछ दर्शन कराएं, इस प्रकार का गुरु कृपा से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और स्पेशली मैंने जैसे ऑफलाइन भी आपको बताया कि मैं थोड़े दिन पहले जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर रहा था अबाउट वेदास, एंड आई केम अक्रॉस योर यूट्यूब चैनल। एक दो वीडियो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप हिंदी में भी समझाते हो, इंग्लिश में भी समझाते हो, तो मैंने तुरंत सोचा कि ओके, लेट मी रीच आउट टू यू। और आपका फिर से धन्यवाद कि आपने वो एक्सेप्ट किया, हमारी बात हुई और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू। ओके, यस, शुक्राचार्य जी, जो पहले से शुरुआत करते हैं कि आजकल बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं अराउंड सनातन धर्म, और
मैं जितना समझा हूँ वो ऐसा मैं रिसेंटली थोड़ा समझा हूँ कि वो हिंदू धर्म से भी ऊपर है. इनफैक्ट सनातन धर्म इज probably loosely connected with Hindu dharma, but yes, I think you are proper authority to guide us on what is Sanatan Dharma. देखो अद्वैत जी, सबसे पहले तो हम ये समझें हम्म. कि हिंदू धर्म, देखो शब्दों का अनेक अर्थ होता है. हम्म. हिंदू का भी लोग अलग अर्थ करते हैं. कुछ सिंधु नदी के साथ जोड़ते हैं, कुछ इंदु अर्थात चंद्र के साथ जोड़ते हैं. हम्म. कुछ हमारे तो व्याकरण में एक सूत्र है सेर्य पिच्च करके, जो स को ह बना देता है. तो वहां से सिंधु को हिंदू करके, फिर हिंदू को हिंदू, हिंदू हिंदू को हिंदू करके, तो इस प्रकार से हम्म. हमारे सभ्यता में हम्म. जो वैदिक शैली जो हमारी है, हम्म. तो वेद धर्म को हम सनातन धर्म कहते हैं. और सनातन धर्म का अर्थ होता है वह जो सनातन है और धर्म है. और हो सकता है कि अज्ञानतावश हम कभी कभी कहते हैं अनेक धर्म, और दूसरे दूसरे धर्म नहीं होते हैं. अनेक पंथ होते हैं, अनेक संप्रदाय होते हैं. धर्म एक होता है. धर्म जो है वो सनातन है. और सनातन का अर्थ होता है इटर्नल. हम्म. सनातन का अर्थ होता है जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में हो. और धर्म का अर्थ होता है जो धारण करता है. एक बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, धारणा धर्म मित्याहु, इस प्रकार: धर्माधारयते प्रजा यस्याधारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः. तो ये हम व्याकरण में भी हम देखते हैं. तो धर्म शब्द जो है वो धृय धातु से उसकी उत्पत्ति होती है. धृय का अर्थ होता है धारण करना. ओके. धारण करने के विषय में हम कहते हैं तो इसको हम सस्टेनेंस कहते हैं. जैसे हम सस्टेन करते हैं, वो जो हमें पालता है, वो जो भार हमारा संभालता है, वो धर्म है. धारणा धर्म मित्याहु, जो जोड़ करके रखे वो धर्म है. और बहुत एक ये भी है कि लोगों ने उसका एक लूज ट्रांसलेशन करा हुआ है, रिलीजन. देखो, हमारी एक समस्या ये रहती है अद्वैत जी, कि हमें हमारे सनातन धर्म को हमारे वैदिक शैली के फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा. हम वैदिक धर्म को, वैदिक सभ्यता को, सनातन धर्म कह लो, हिंदू धर्म कह लो, इसको आप जूडेयो क्रिश्चियन फ्रेमवर्क में अगर आप देखने जाएंगे तो फिट नहीं बैठेगा. इसका मैं उदाहरण देता हूँ. हमारे में पंचायत विधि होती है, हो सकता है दर्शकों ने सुना हो. पंचायत विधि जो है हमारी स्मार्त पंचायत हमारी विधि होती है. और इसमें स्मार्त का अर्थ होता है स्मृति प्रदत्त. जो हमारे स्मृति शास्त्र है उनसे हमारे पंचायत, पंचायत का अर्थ होता है 5 मार्ग. हमारे 5 मार्ग बताए गए हैं पुराणों में, और पुराण से प्रदत्त है. और इसमें इसमें से ही बढ़ा करके हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, इन्होंने षणमत की स्थापना की है. तो इसमें पंचायत में 5 देवता आते हैं. गणपति आ गए, विष्णु आ गए, शिव आ गए, माँ आ गई, माँ भगवती, और सूर्य नारायण. हमारे सनातन धर्म में ये 5 हैं पंचायत. और षणमत में, षणमत का अर्थ होता है 6 मार्ग, इस प्रकार माने. इन 5 के साथ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान कार्तिकेय, जैसे सुब्रमण्य कहते हैं, मुरुगा कहते हैं, इनको जोड़ करके पुराण आधारित, शास्त्र आधारित, स्मार्त आधारित इस शब्द की इन्होंने व्याख्या की. तो हमारे जो सनातन धर्म में इस प्रकार से है. अब यदि हम एक जुडेयो क्रिश्चियन फ्रेमवर्क को लेकर के चलें, जहां यू हैव वन आइडिया ऑफ अ गॉड and you have a theocentric model. थियोसेंट्रिक मॉडल का अर्थ, वैसे तो ये थोड़ा ग्रीक लैटिन होता है. थियोसेंट्रिक मॉडल का अर्थ होता है कि एक गॉड और उसके इर्द गिर्द बनी हुई एक सभ्यता. ओके. अब यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल आपने जो जूइश कॉन्सेप्ट है गॉड का, जो वो याहवे इत्यादि, फिर आपके क्रिश्चियन गॉड होते हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो द लेटेस्ट ऑफ द एब्राहमिक फेथ जो इस्लाम है, तो यहाँ पे भी उनका एक कॉन्सेप्ट है. उसी के इर्द गिर्द आपने एक कल्चर बनाया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल रिलीजन. अब अगर इस प्रकार से हम देखने जाएं तो हम सनातन धर्म में तो 5 रिलीजन हो गए. और हमारे एक ही
घर में हो सकता है कि हमारे कोई भाई हो बहन हो वो शिव जी की उपासना करें। हो सकता है माता जो है हमारी माँ वो माँ भगवती की सेवा करती हो, पिताश्री हमारे शिव जी के हों। तो इस प्रकार से अनेक अनेक जो है, हम्म लेकिन लेकिन ये सब के सब एक ही सनातन धर्म के सूत्र में बंधे हुए हम्म 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 हैं, और एक ही सभ्यता के। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि रिलीजन इज ए बिट ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हम्म एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सनातन धर्म वी आर हम्म टॉकिंग अबाउट completely separate idea, हम्म because this is something whenever we listen, whenever we read about history, uh, हम्म and we take a look at the invaders who came over to Bharatvarsha, हम्म they had various different modes and objectives, हम्म and they realized that we need to understand the idea of divinity in this country. We need to identify what exactly is the concept of the divine in this land. तब फिर उन्होंने इस प्रकार की जो रिसर्च शुरू की, और वापस जब वहां पे गए और उन्होंने पूछा कि असल में है क्या, तो उन्होंने कहा भाई हम 5 लोगों से मिले और 5 लोगों को हमने पूछा कि ओम का अर्थ क्या है, और हमें हम्म 10 उत्तर मिले हैं। ओके Essentially they were trying to catch smoke, हम्म which is the reason why हम्म after all these invasions, still after all these attacks, हम्म Sanatana Sabhyata remains intact. हाँ राइट एंड इनफैक्ट जो अभी आपने समझा उस हिसाब से मैं काफी हद तक कुछ समझ रहा था। तो एंड यू प्रॉब्ली वेरी राइटली सेड दैट लाइक कि रिलीजन एक अलग कंसेप्ट है, सनातन धर्म इज सेपरेट थिंग, एंड वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ दैट सनातन धर्म। हमने कई बार इस प्रकार से भी कहा है अद्वैत जी कि अगर हम्म हम धर्म को ही लें, हम्म अगर धर्म को हम forget about the concept of a culture or सभ्यता हम्म or some idea of the divinity, हम्म even at the most basic level, हम्म even at the most basic level, आप इस प्रकार से समझिए कि हम्म धर्म का अर्थ होता है यूजफुलनेस। हम्म Even though that is not the correct translation, हम्म even just to understand if we can call dharma हम्म usefulness. हम्म आज आज हम और आप यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, हम्म आपने माइक्रोफोन डाल रखा है। हम्म वो माइक्रोफोन जो है, उस माइक्रोफोन की यूजफुलनेस है कि आपकी आवाज को जो भी इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं उसके माध्यम से हमारे तक पहुंचा रहा है राइट और रिकॉर्डिंग हो रही है। राइट ये उस माइक्रोफोन का धर्म है। हम्म जब उसने उसकी यूजफुलनेस अर्थात उसके धर्म का त्याग किया, हम्म what is it to you? it will be The, of no use and absolutely, uh, absolutely. And this is one of the ways that many, there have been other commentators as well, कुछ और विद्वान भी हैं जिन्होंने इस प्रकार से भी कहा है कि धर्म का अर्थ होता है वो जो आपको धारण करे और आपका स्थान बनाए. So that is also a way to look at dharma. mhm, And just to sum up and to bring to the point your question that you asked of whether it is the Sanatan Dharma or the Ved and the Hindu religion, uh, the the way in which we understand this is कि आज भी यदि आपने अनुष्ठान किया, यदि आपने पूजा किया, यज्ञ होम आदि कुछ भी आपने जो जो भी एक प्रकार से हमारे हम हमारे जो प्रैक्टिसेस होते हैं, यहाँ पे जो मंत्र का प्रयोग होगा उसमें से मंत्र जो है वो ऋग्वेद के होंगे, एंड ऋग्वेद इज द ओरिजिनल टेक्स्ट. एंड there have been many ways in which we can see this कि वेद से ही जो वो ऋचाएं आती हैं वही चीज आज तक हम उसका हम आस्था से और हम सम्मान से उसका हम जो है उन मंत्रों का प्रयोग करते हैं. तो दैट इज a continuation, that is a cultural, and in a sense, if you wish to use the term religious, then even a religious continuation. okay Uh, and therefore, yes, it is the Vedic religion, it is Sanatan Dharma, and for those who wish to call it Hindu religion, of course, Hindu religion. okay और एक probably silly question है, forgive me if I am No, asking no, again and again but just trying to understand. So the other religions apart from Hindu, they all are also part of Sanatan Dharma whether we believe it or not?
This can be, this is essentially when we look at it, when we talk about Sanatan Dharma, we take a look at Ved. That is what Okay. we're looking at. So when we take Okay. a look at Ved, we look at Astik Darshan and Nastik Darshan. Okay. हमारे जो है वेद में जो हमारे आस्तिक दर्शन होते हैं, that is what a lot of people incorrectly translate as orthodox दर्शन, और Uh-huh. बाकी के जो है वो अनऑर्थोडॉक्स दर्शन है. Uh-huh. सिंपली पुट, जो वेद को अथॉरिटी मानते हैं वो आस्तिक दर्शन में आते हैं, और जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन में आते हैं. And Astic darshan or Nastic darshan mein, for example, there are many different Nastic. So you will continuously be finding, for example, the Lokayat and the Charvak, even the Jaina darshan, Bauddha darshan. These come under Nastic darshan. हमारे सनातन धर्म में 6 आस्तिक दर्शन हैं, right? So those are the way in which we understand that this is the continuation of Veda darshan. And this, and in terms of the other religions, when you talk about Sanatan Dharma, we are referring to the Veda Dharma. Okay. And then how it is connected to Bharat or India? Like we are, so basically when we talk about Sanatan Dharma, which is, like related to Vedas and all, then we have to, look at that from uh, India perspective, right? Our culture. So uh, I'm I'm not sure what question I should ask you, but how do you connect to the Indian culture? So basically, uh, uh, if you could relate it to the India, uh, so if I'm born in India, then of course I'm part of a Sanatan Dharma. Uh, then it doesn't matter which religion I belong to, or no. I think, Advaitji, we have to go back to the typical idea that has been spoken about at great length by various scholars, the concept of a dharma bhumi, pitra bhumi, matra bhumi. And I Okay. think that essentially will be able to answer this question. I think let's just say this in Hindi. Uh-huh. देखो, 3 हमारी भूमि जो होती है, ठीक है, Uh, हमारी पितृभूमि है, मातृभूमि है, और हमारे जो है धर्म भूमि है. uh-huh. अब हमारे धर्म भूमि भारत है. Uh, And in particular, I am a little bit particular in when I reference Bharat and when I reference India. okay. So you will have to make that distinction. Okay. So India, when we speak of India, at least when I speak of India, I speak of India post 1947. When Okay. I speak of Bharat, I refer to the Sabhyata. So, for example, my Dharma Bhumi would be Bharat. My Okay. Pitra Bhumi would be Bharat. You see, Okay. my Okay. Matra Bhumi would not be Bharat. My Okay. Matra Bhumi, for example, would be England. You Uh-huh. see, Uh-huh. and that I think would answer your question Okay. in that Okay. in that dharma bhumi आपकी भूमि है जहाँ पे धर्म का वो है, and pitru bhumi is the land of your ancestors, and Hmm. matra bhumi is of course your janma medini, जो आप Hmm. जो आपका जन्म का जो देश हो, स्थान हो. So that, so I Hmm. think that concept might fit. And in terms of when you talk about people of Mm-hmm. other faiths in particular, because um, as you mentioned, that there may be others who are Hmm. born in India, their bhumi remains India. The Hmm. land of their faith may be different, but they are part of the Bharatiya culture, Hmm. and I think that should suffice. Hmm. That Okay. they are part of the larger Bharatiya culture, and And hence they are also part of the Sanatan Dharma. if they are part of the Sanatan Dharma, as explained before, Okay. of the Astik Darshan, then yes. Okay. Okay. I think I'm 80% clear, but okay, let's park this topic aside now. But thank you for explaining so much in detail. Uh, okay, now if we go to the Vedas, right, and we discuss little bit offline also. Uh, I think most of us, probably all the youngsters, only know four Vedas and six Vedangas and then Vedant. That's it. Like and some Upanishads and all. We know only the names. But if you could please tell us about what are these Vedas, Vedangas, and the importance of it, and uh, as a human being, what should
I look for in these scriptures, and why should I understand those things? Okay. Yeah. Yeah. Okay. First and foremost, Advait ji, I would start off by making one distinction. Okay. And this is one distinction which I think is very important to understand. It gives perspective. It also answers, to a certain degree, the question of why I should study it. When we take a look at for example, our languages, not we're talking about whether it is Gujarati, Marathi, so on and so forth, all these languages, they all come, essentially language is a huge part of culture. Right. So when we take a look at that, we take a look at the entire history of language, and ultimately we will end up with Sanskrit. And this is where a very important distinction needs to be made. When we take a look at Ved, you see, there's one concept today which a lot of people they speak about this, but I think a distinction needs to be made here. They say that language has not got a religion. True, fine, that is absolutely okay, but a distinction needs to be made. Now, this is a very important point. When we take a look at Abrahamic religions, you will take a look at the oldest, which is your Judaism. Then came Christianity, then came Islam. So the Jewish religion and the Jewish faith, you have what's the ancient Hebrew, right? The Torah is written in ancient Hebrew, the Old Testament, Itihasa. So you have that. Then you have Christianity. In which, again, you're looking at somewhat Hebrew, then later on Latin and Greek sources, and then coming into the Romanized sort of English. Today you have what's known as probably the King James Bible, which is sort of your standard. Right. Then we're taking a look at Islam. That is in Arabia, so that it's in Arabic. So again, another Semitic language. Christianity, of course, as historical evidence points, Isute, Jesus, he spoke in Aramaic. That was the language, which is roughly, I think, about a couple of handful, maybe 2 or 3 villages somewhere in outer parts of Syria, which actually do speak this language. I'm not entirely sure, but this is a very endangered language, Aramaic. But even though it was Aramaic, these sources are written in various other classical languages as well. So now we take a look from Hebrew, ancient Hebrew, we take a look at Latin, we take a look at Greek, and we take a look at Arabic. In all these languages, you had a thriving literary culture well before these texts came into existence. You'll find that in Hebrew, you'll find a great amount of Latin literature. You will find great amount of literature, poetry, texts in Arabic, which predates Islam. So these texts of these religions were written in a language. Are you with me so far? Yes, yes, yes. Now we come to our Vedic religion, Sanatan Dharma. We have our most ancient text, which is the Rig Veda. When we take a look at texts, of course, Advait ji, if we do go into it, then there are various different, the time frame is, you've got of course, great amount of literature. You have all sorts of bhashyas. You have, for example, the Itihasa Puran, and then we carry on with the Upanishads and Samhita, and we get to the main Samhita, which is the Ved. And in that, the highest is the Rig Veda, which is the most ancient. Rig Veda is essentially where you have Vedic Sanskrit. So you have the Rig Veda. The Rig Veda is in Vedic Sanskrit. Yes. Okay. You don't have any literature which is predating Rig Veda. The Rig Veda is not written in Vedic Sanskrit. Vedic Sanskrit has come from Rig Veda. Okay. So you're saying that the other scriptures that are written for other continents are written after the Vedas were written, is it? No. I'm talking about their language. I'm talking about the fact that Hebrew existed. Arabic existed well before the religious text came into being. Arabic is there. Okay. ये सब पुस्तकें वो भाषा में लिखी हुई है. Right. Yeah, I'm getting it. हमारे वेद भाषा में नहीं लिखे हुए हैं. हमारे वेद से भाषा उत्पन्न हुई है. ओके. तो फिर वेद किस में लिखे हुए हैं?
Ved, Ved are in Vedic Sanskrit. They are in Okay. Vedic Sanskrit. As in the idea, the concept Mm-hmm. that I'm trying to drive here is the fact that it is the Rigveda which is the source of language. Okay. Languages have been the source of these other texts. Uh-huh. But on the opposite side here, it is Mm. in fact the Ved which is the source of Sanskrit. And so, Mm. sorry, and so for that reason, we have to make that distinction. And ये हमें एक धरोहर प्राप्त हुई है. Mm. ये हमें इसका अध्ययन करना चाहिए क्योंकि this is the one of the most important points of our culture. The fact that we have an unbroken literary um, uh, culture. We Mm-hmm. have a culture in which the erstwhile pandits who used to Mm. recite these mantras thousands of years ago, it is so rigorous, the entire process of studying this, that today when we hear these mantras from qualified pandits, one should hope, they would actually be able to recite it in the exact same way, which is where, for example, in the Vedang, which I'm sure we would come to, which is where Shiksha Shastra is extremely important, because every new student, whoever enters the fold of Panini Vyakaran, is taught Shiksha Shastra. They are taught exactly how to pronounce, and they are taught the nuances and the intricacies of all the mantras. And this is one of those reasons. Uh, so I think that is Mm-hmm. in particular Yeah. is I'm understanding the difference between us and the other. Uh, s- Trying to understand how it is going, how it is helping us. how is it helping us. Yes. Or uh, Well, we have, of course, in terms of there are many different ways to look at this, Advaitji. First mm-hmm. and foremost, we all have a debt that we do owe. We Mm-hmm. all have debt that we do owe. It can be, I'm sure we spoke about this earlier, in Mm-hmm. which we already have certain debts which we Yeah. incur as Yeah. soon as we work. Yeah. And this is a service to that. At the same time, this is a service to our culture as well. And for Mm-hmm. those who are so inclined, this is also a service to their sampradaya or their panth, which would come from the Ved. Mm-hmm. Uh, at the same time, I think it is important to, even though not everybody is going to be going into the Vedic fold and studying the Ved, I think it is essentially very, very important because this is a treasure trove of unbelievable amount of literature and unbelievable amount of knowledge. It truly is, in which especially when we take a look at the Ved, of course, sometimes it can seem as though it is just the mantras are only really invocations and in order to appease certain devta and so on and so forth. But in the entire Samhita of the Ved, you have the entire corpus of Upanishads, and it is the Upanishads which really do deeply discuss some of the most profound answers to the various questions that we would have. Mm-hmm. I Right. think that is one very important reason why we definitely should Mm. study, if not Sanskrit and if not the Ved, certainly we can. I'm sure we all can in various different languages now. That there have been good translations, and I think we should make it a point to at least attempt to make ourselves aware of Mm. texts. Right. And yeah, I think as you said, like I think because of this exhaustive information, I mean the knowledge that we have in this scriptures, uh, and since it is the oldest one, it is the most reliable, right? And as you said, like it's written even before the language was formed, right? So that shows that okay, this is the first, and then after everything is even started, right? uh, okay, okay, all right. Yes, I think you are saying something. No, no. Okay, okay. As in, of course, when we all have these. Look at जी, हम सब ही पूजाओं में जाते हैं, Hmm. खानों में जाते हैं. हो सकता है किसी का मंगल कार्य हो, विवाह इत्यादि संस्कार में जाते हैं कहीं ना कहीं पे. Hmm.
हमारे षोडश संस्कार तो है ही, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे हम जब देखते हैं, जिस प्रकार से पहले ही हम बोल चुके कि ये सब वेद मंत्र जो है इनका प्रयोग किया जाता है, अ, एक प्रकार से यदि किसी को आस्था हो, और विशेष रूप से इफ somebody is curious, that is a very important doorway to understanding Vedic culture. हमारे पास क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए कि जब कोई वैदिक पंडित पुरुष सूक्त की बात कर रहे हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर रहे हैं, जो प्राय करके होता है, पुरुष सूक्त आता कहाँ से है? That comes from the Ved, that comes from सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। और यहाँ पे the actual cosmic being, and इसमें तो of course you can go on and on about the Purush Sukt because it is so profound, which the cosmic properties of what this entire being is elaborated in the Purush Sukt. It's far too much to do in one session, but but I get so excited when it comes to this topic. So and recently, like, you can correct me based on my recent exploration about Vedas and all these things. What I feel is that whatever questions that we have right now, the challenges, or probably we will have in future, not only us, but all the people that are going to be born after us, and so many things, people, I think all the questions answer are already there in these scriptures, right? Our Vedic scriptures. So whether it is about, like Ayurveda or Jyotish Shastra or Vastu Shastra, or about, astrophysics, or anything, right? All the answers are there in Vedic scriptures. Is it correct? Even of how to live life in a day to day. I just like, I was watching one video where it was mentioned that Atharva Veda mentions about how to live our daily life. I may be wrong, please correct me, but what I'm trying to say is that all the questions answer are there. I think the best way to answer that question, Advait Ji, is to understand exactly what the Ved is. Ved comes from the term Vidhi Vidyani. It comes from the root Ved. And the Ved are a collection of mantras that were heard. Shruti, yeah. Yeah, Shruti, Yes. Shrunya Shravane. Shrunya Shravane Dhatu in the Sanskrit language, it means to hear. ये वेद सत्य है जो सुने गए थे। ये एक दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हम जब कहते हैं श्रुति शास्त्र, जब हम सुनने पे इतना जोर क्यों देते हैं, और हम ये क्यों कहते हैं कि यहाँ से सब सुने गए थे? सुने जाने का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं वो एक वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन है, वो कोई एनर्जी है जो वाइब्रेशन के रूप में, एक ध्वनि के रूप में आप तक पहुंचा है। तो लिखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमने अब वहां पे सुन तो लिया, अब जैसे हमारी संस्कृत भाषा में हमने लिखा, या देवनागरी हो या इत्यादि, इसे हम कहते हैं अक्षर। ये अक्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ होता है नाश, अक्षर का अर्थ होता है जिसका कोई नाश नहीं होता। ओके, ये ध्वनि जो है, ये ध्वनि आप भी जानते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस। वी ऑल स्टडी दिस, कहीं ना कहीं से कंटिन्यूअसली, कहीं ना कहीं से आई हुई है। When you talk about the Ved and Veda mantras, the source of those mantras are something eternal. That is the reason why Ved is called apaurushaya, that which has not come from Purush or human. That is why we consider it to be apaurushaya. It is not of human source. It is from a cosmic, even more divine source. Something which is eternal, something which is Sanatan. That is the parampara that we follow. Now, when we take a look at your question about do these have the answers to all of these, when in यहाँ पे पद्धति बहुत हैं हमारे जो है, वैसे तो हर एक शास्त्र में इस प्रकार का दर्शन दिया जाता है, दर्शन में भी इस प्रकार का दिया जाता है, योग शास्त्र में तो बहुत है कि किस प्रकार से आप योग को ले लेते हैं कि अपने श्वास का नियंत्रण करके आपने नर्व्स को इस प्रकार से सिंथेसाइज करो कि जो एक भौतिक अनुभव है
उससे आगे आप बढ़ सको. Mm-hmm. This is in the Yoga Shastra. It is in various different Shastras as well. The Darshan talk about this as well, in some more than others. When they speak of this, they are talking about going beyond Mm-hmm. these senses, and that is where the term Adhyatma comes from. Mm-hmm. Because what we have, that is the reason why I have a bit of an aversion to the term spiritual. We are Adhyatmic in nature. We are Adhyatmic in nature. We are going beyond that realm. So when we have our questions, जैसे आपके पास प्रश्न है, Mm-hmm. कहते हैं प्रश्न का उत्तर वहां पे है, उपनिषद में है, वेद में. Mm-hmm. उपनिषद और वेद वही सोर्स से आए हुए हैं. हमारी जिज्ञासा जो है, उसको हम यहाँ से परिपूर्ण करके, हम आगे बढ़ा करके, if we want to go, and a lot of people have done this. Most have done it knowingly, some have done it unknowingly. And when they have done it unknowingly, they have been able to achieve that from that source, and they are some of the most important people who have ever lived. And we celebrate their successes today. I wouldn't want to go into a great deal of detail about that, but when we take a look, कुछ लोग इसे superhuman कह जाते हैं कि ये superhuman ability है. ये superhuman ability जब हम कहते हैं, तो मतलब भौतिक अनुभव से आगे बढ़ करके वो कहीं ना कहीं वो जो divine source जो है, वहां से कुछ ना कुछ connection हुआ है. This exactly is the entire process that we talk about. And yes, on a more very simplistic understanding, yes, the Ved in particular, अथर्व वेद में तो अनेक अनेक इस प्रकार के मंत्र और अनुष्ठान भी जिस प्रकार से होता है, उसका है. लेकिन हाँ, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इस प्रकार के अनेक धर्मशास्त्र के भी ग्रंथ होते हैं. तो जो जीवन, हमारे जीवन में जो भी प्रश्न होते हैं, जो अर्चने आती हैं, इस एक प्रकार से हमें इट इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. और कहीं कोई आइडिया आ जाता है कि हाँ, इस प्रकार हम आगे कर सकते हैं, इस प्रकार हम इसमें स्टेप इस प्रकार से ले सकते हैं. And there are many of these texts. You have Niti Sutras, you have Hitopadesh written by Narayan Bhatta, you have all these wonderful, and Sahitya. How can we forget Sahitya? Sahitya has got very great amounts. Subhashit Ratna Bhandagar. These are wonderful, wonderful texts which give you sort of sutravat ideas. And even if we can implement them in our own life, we would find extremely positive changes. Okay. Like dots are trying. I'm trying to connect the dots different, like here. But yes, I'm understanding here the all these concepts. Okay, and yes, so and you mentioned about, rather than discussing about the Vedas and all, I think because as you said, they are the supremmost at the PhD level, as you said that day, right? But about Vedangas, if you could talk at least a little bit about those things. See, the Vedanga are, well, the clear translation is Vedanga, the actual limbs of the Ved. These are the limbs. These are the 6 auxiliary disciplines. ये साथ में ये disciplines पढ़ाए जाते हैं, जिसके बिना वेद में प्रवेश नहीं होता. Very simple. Why? Because when we take a look at Ved, if we take a look at Ved just as a text, it will be a text. But with the Vedang, it becomes something very special. Why? Because it is the Vedang which teach you exactly how to understand the Ved. अब जैसे कि शिक्षा, अब आप शिक्षा शास्त्र तो, let me very in a concise form, let me just go through the 6, and then if we can discuss it further. So शिक्षा is जो उच्चारण होता है, जिस प्रकार से शब्दों को बोला जाता है, जिस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, and how these शिक्षा शास्त्र is about that. It is known as phonetics. अंग्रेजी में जिसको phonetics कहते हैं, वो है. कल्प जो हमारे जो इत्यादि जो अनुष्ठान इत्यादि जो होते हैं, जिस प्रकार नित्य जो पूजा, away from नित्य पूजा, राजोपचार, महाराजोपचार, so all these sorts of things come under. निरुक्त जो है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष. अब निरुक्त जो है, इसको हम इंग्लिश में एटिमोलॉजी कहते हैं, कि यहाँ पे एक शब्द है, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई.
हम्म अब किसी का भी संस्कृत में किसी का भी नाम हो, आ, आ, या तो कोई भी शब्द हो, हम्म वो कहीं ना कहीं उसका रूट है। रूट और सूत्रवत उसमें अनेक अनेक व्याकरण के सूत्र लगाने से वो शब्द की उत्पत्ति होती है। तो वो समझना, वो पूरी प्रक्रिया समझना, वो निरुक्त है। व्याकरण ऑफ कोर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्याकरण इज ग्रामर। ग्रामर, या Without that, you are not going to be knowing anything about Sanskrit. And at very best, you'll probably know a couple of words here and there and certain formulations, but you won't know how those words came into existence. हम्म Chand is a particularly favorite of mine. Chand जो है, it means meters. अनेक अनेक छंद हैं। वेद में भी छंद है, हमारे साहित्य में भी हम छंद अनेक प्रकार से होते हैं। हमारे जो श्लोक होते हैं ना अद्वैत जी, हम हम्म हमारे संस्कृत में जो श्लोक होते हैं वो अनेक अनेक छंद में होते हैं। अब जैसे कि जो नॉर्मल बहुत कॉमन होता है वो 32 अक्षर का होता है, चार पद होते हैं उसमें, आठ आठ अक्षर के। सो 8 हम्म 4 is 32, and for हम्म example any of these, most of the texts, for example majority of the Mahabharat, majority of the Puran, the Gita, Srimad Bhagavad Gita, which again of course is from the Mahabharat, all these are predominantly written in Anushtup Chand. This is simplified, लेकिन ऐसे इस प्रकार से अनेक है। इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा, शिखरिणी, वसंत तिलका, वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स, शार्दुल विक्रीडित। तो ये अनेक प्रकार के छंद हैं। और ये छंद शास्त्र जब तक से आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि असल में श्लोक किस प्रकार से रचित है और इसका हम्म किस प्रकार से, why, because if we go too much into this, I think it will yeah, become a little bit mathematical. right, But this is the meters are very very important to understand how you actually sing a shlok, right. and how that shlok is actually created and is a mathematical equation. Okay. Right. Okay. I think, yeah, as you said, like it is all about how. Once you know these six Vedans, probably you will be now eligible to read the Ved, actually. And I think we've missed off the Jyotish, which is we've missed off Jyotish. Jyotish is the sixth Vedang, and Uh-huh. Jyotish में of course दो भाग हैं, Mm-hmm. Jyotish है और गणित ज्योतिष है. Uh-huh. Both come under Jyotish, Uh-huh. but Ganit is the more mathematical calculations which we use in Jyotish, and Palit is of course when we take a look at the more adhyatmic perspectives, Mm-hmm. and we try and understand and decipher Mm-hmm. how everything in this world, whether it is relationships to the weather, Mm-hmm. how that identifies with this entire cosmos. Oh. And when we take a look, that is That's Jyotish. that is so exciting to know. But like, okay, okay, fine. Uh, I'll come to I would want to know about your initiative and all that you are doing at Bhuj. But before that, I have a couple of questions. One is very probably a silly question, childish question. The thing is, while you were explaining, what I was thinking is that if I understand all the Vedas, and if I go through all this process that you have gone through to understand the Veda and all. Uh, and then after knowing all these things, and if I commit to myself that okay, I'll apply all this knowledge in my life, then can I become a superhuman then? Like, I mean, like I like, because I know everything, I'll not have, I'll have challenges and questions, but then I know the answers for everything. Uh, Advaitji, I think the best explanation of that comes from the Atma Shatak. It's written by Adi Guru Shankaracharya, Mm-hmm, uh, in which there's a very famous line which he's mm-hmm, repeated in every verse. And mm-hmm. I think you want to study the Ved, and you want to study the Vedang and the Vedant, which is Upanishads, and the Darshan Shastra, and then we're going to become superhuman. What makes you think you're not superhuman? Chidananda Rupa Shivoham Shivam, Shiv. Shivam. And So, that of course when we take a look at Vedanta Shastra, then you get to understand that, in that the faculties which Vedanta Darshan speaks of are the faculties in you. okay, so I'm already there.
And okay, and that is what I think, I was recently listening Ashtavakra Gita and by Osho. And the only thing that I understood about out of all these things is that, like, that I don't need to do anything. I'm already there. I think that those there needs to be a churning. There needs to be a churning. There needs to be work. Okay. And I think that kuch to we have to do in order. Even though Yeah. very simply put, as a lot of great Vidwans have always mentioned, कि Yeah. आपने दोनों हाथों को अपने आंख पे रखा हुआ है, Hmm. आंख के हटाने हैं, लेकिन वो हटाने की मेहनत तो करनी पड़ेगी. Yeah, I mean, so we can, of course, we should accept that, like, aham brahmasmi, but then it also requires work to continuously be in that mode, right? So, sorry, I'm asking so many No, no, stupid that's questions, but no, it is just they're out not of at curiosity. all any questions of that sort. It's very important that they that you ask, and I suppose we try our best to the best of our abilities to answer them. Yes, yes, thank you. Okay, now coming to the initiatives, the goals that you have, like you are doing, you have taken some project at Bhuj, right? So yeah, if you could please talk us about that, and why you are doing this, what is it that you want to see in the world, and yes. हमारे सनातन धर्म में तो है ही अद्वैत जी, हमारे गौ सेवा इत्यादि ये हमारे एक कार्डिनल ड्यूटी रहती है. Hmm. हमारे माताओं में जिस प्रकार से माताओं में वर्णन रहता है कि हमारी माँ होती है या तो हमारी धरती होती है, Yeah. माँ भगवती होती है, जो कोई अब तो राजा नहीं रहे, लेकिन फॉर एग्जांपल राजा के जमाने में रानी भी एक माँ होती थी और गौ भी एक माता होती है. Hmm. तो ये हमारे एक सनातन धर्म की एक अभिन्न अंग है. और हमारे दर्शन में तो इस प्रकार से भी बताया गया है कि भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात् दुग्धम ददति लोकेभ्यः गावो विश्वस्य मातरः, कि सूखा घास खा के और तालाब में से पानी पी करके जो दुनिया को दूध दे, Hmm. इसीलिए इसीलिए गाय जो है वो विश्व की माता है. Mhm. और कई साल पहले वैसे तो हमारे में भी एक प्रकार से माता पिता ने भी इस प्रकार से संस्कार दिए कि हमें गौवंश के प्रति भी हमें एक निष्ठा रखनी है और गौ सेवा भी करनी है. तो ये एक संस्कार तो होता ही है. Mhm. लेकिन जब एक प्रकार से हमने भी थोड़ा ध्यान से गौर से देखा, तो एक बहुत ही अनसेटलिंग सत्य सामने आया अद्वैत जी, और ये सामने Mhm. आया कुछ साल पहले. Mhm. 1947 में लगभग 130 130 देसी नस्ल थी. Mhm. देसी नस्ल का अर्थ होता है हमारी देसी गाय, Mhm. ब्रीड्स ऑफ देसी काउज, जो Mhm. हमारे देश की, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट. बाय इंडियन सब कॉन्टिनेंट आई डोंट मीन जस्ट इंडिया. इंडिया हो गया, हमारे साइड दोनों देश हो गए, इस प्रकार ये पूरा जो है ये भारत में हमारी भारतीय जो देश है, इसमें जो देशी नस्ल है Mhm. ये 130 थी. Okay. In 75 years the number has come down to 35, Advait ji. Okay. From 130 we have come down to 35. Okay. And that was a very alarming statistic to be confronted with. It was for that reason that I decided that we should, to the best of our abilities, at least start, कुछ कम से कम शुरुआत करें कि Mhm. लोगों को इस प्रकार से हम जागरूक करें, और साथ ही साथ गौवंश की जो हम सेवा कर सकें, तो हम संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए इस प्रकार से कोई कार्य करें. Mhm. Fortunately, we have a place in Bhuj, Mhm. and that is where the entire genesis of Nandivan came into existence. Nandivan is a Vedic sanctuary for Kankrej. Interestingly enough, हमारे देश में अनेक अनेक प्रांत में Mhm. अनेक अनेक देसी नस्ल है. आपके दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो ओंगोल, पुंगनूर इस प्रकार है.
हमारे गुजरात साइड आएंगे तो गीर है, कांकरेज है, बनासकांठा एरिया में है। हम अगर पंजाब हरियाणा साइड चलेंगे तो वहां पे राठी साहिवाल गाय हैं। तो इस प्रकार अब यहाँ पे थोड़ा जो है इस प्रकार से जो है शोध करने के बाद पता चला कि असल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज जो 200 250 साल 300 साल पहले जब आए थे, तो साथ में अपनी गाय लाए। अच्छा। और ये है होस्टीन फ्रीजन, स्कॉटिश हाईलैंड वाले, हमारे जर्सी, इस प्रकार की गाय साथ में लाए। ओके। और वो तो ठीक है, चलिए, लेकिन इंडिया में किस प्रकार से यहाँ पे कार्य हुआ और कंटिन्यूसली चलता गया 47 के बाद भी, कि हमारी जो देसी नस्ल है जिसमें आयुर्वेदिक तत्व है, जिसके मुक्त कंठ से भूरी भूरी प्रशंसा हमारे शास्त्रों ने की है, भले ही वो 1 लीटर 2 लीटर से ज्यादा 3 लीटर से ज्यादा दूध न दे, लेकिन वहां पे तत्व था। अब यहाँ पे जो ये गाय आ गई, ये एक टाइम के 20 लीटर 22 लीटर 25 लीटर दूध दे रही थी। इन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी। They started with the crossbreeding. They essentially wiped out various different species of what we know today as Bos indicus. Bos indicus is the actual cow, जो बॉस बोवाइन जो होती है, और उसमें हमारे इंडिकस का अर्थ होता है हमारे जो इंडिया रिलेटेड, भारत रिलेटेड। तो ये जो हमारे जो स्पीशीज हैं, सब स्पीशीज, इसमें ये क्रॉस ब्रीडिंग हुआ और इसके वजह से हमारे नस्ल जो है 120 से लेकर के 35 तक हो गई है। एंड स्टार्टेड विथ कांकरेज, होपिंग महादेव की कृपा से, गोपाल और गौ माता की कृपा से, कि नंदीवन जो है, it becomes a sanctuary where people can come, people can visit. Of course, you are more than welcome. हमारे आपके दर्शक are more than welcome. We are in Bhuj in Madhapur, and we now have some Kankraj cows. We are very particular that we are looking at saving a species. We are saving a breed, and it is for that reason that we are only having Kankraj. So we only have Kankraj, and we are only working at that level. Okay, nice, nice. And so you are saying that if we protect this particular breed, then the milk that these cows are going to give us probably have a will have those qualities, the tattvic quality that you just Yes, mentioned, the holy yes, cow milk, that would be there, right? And you mentioned, in the first that because serving cow or saving cows are, are like mother, right? So I think that is why you are giving the topmost importance to this initiative, that's right? right. Yes. Okay, okay, nice, nice. No, good. Thank you for explaining in detail about your initiatives and whatever you are doing. Thank you very much. Uh, yes, it gives, it's very thought provoking, like because people living in cities, we have different goals and different ideas about life, whereas you have totally different, and yeah, I mean, it is it is interesting, and yes, thank you, thank you. Uh, I, I think it's best if in response to that, I think it's that famous Swami Vivekananda's famous line at that Chicago address, that we are all winding our way to the same goal. Mm. And I think that would be the best way uh, to understand that even though we may have different paths, Yeah, we are going to the same place. ultimately, Payasam Arunava Eva, they all meet at the same ocean. And I think that's the beauty of our culture, right? About our tradition, about his scriptures and all these things. That even if you're not a believer, even if you're not in of this faith, but yes, we welcome you, right? You're part of us. And whether our paths are different, but yes, we'll meet you there. Right? No religion, no community, no sect, no sampradaya. No one has a monopoly on truth. No one has a monopoly on compassion. Yeah, yeah.
that truly is the beauty, that these are eternal, these are universal, um, they're universal. Well, you can call them goals, you can call them traits. Yeah. um, these are universal topics, and no one Mm. person, no one sect, no one group, no one community can lay monopoly on it. Mm. Mm. Yeah. Okay. Before we close this, I was curious today to ask you that what is the meaning of my name, Advait? And I think you are the best person to you know you know give me the description or the definition of this particular word. Well, well, of course, it is. You take a look at Dvait. You take a look at Dvait comes from Dvi meaning two, Right. and that ikar jo hai. This is where nirukt comes into. Vyakran and nirukt is very important. That ikar becomes a because you have a ta, so you have Dvaita, which means dual. Right. सो दो से जो उत्पन्न होता है वो है द्वैत, जो द्वि से उत्पन्न होता है वो है द्वैत, और Mm. हम उसको नए समास कर देते हैं। न या की संज्ञा होती है, अ जाकर के द में अ जाकर के द में मिलता है, शब्द बनता है अद्वैत। Mm. अद्वैत का अर्थ होता है वो जो ड्यूअल नहीं है, Mm. अर्थात नॉन ड्यूअल। Mm. And Advait happens to also be a subcategory of Vedant. वेदांत दर्शन में अनेक प्रकार हैं, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, Mm. द्वैताद्वैत है, और एक अद्वैत वेदांत है। और Mhm. अद्वैत वेदांत जो है वो वैसे तो महादेव से शुरुआत होती है, नारायण से शुरुआत होती है, एंड कम्स ऑल द वे डाउन टू भगवत पाद। Govind Padacharya comes down to Adi Guru Shankaracharya and down to that entire parampara. So, Mhm. that Advaita parampara is the non-dual parampara that we follow. In fact, I also follow. I Mhm. follow Sevadvait. Of course, others follow that. And so your name means non-dual. Yeah. Means जो यूनिक हो, जो सिंगुलर हो, Okay. जिसकी उपमा जो अनुपम हो, जिसकी उपमा और न हो, और जो सिंगुलर ही हो। Okay. Okay. So does it mean that it is beyond the dual, right? Actually, It is A- not a- dual. It is not dual. it is not dual. So Not- Shiva, is it the? Can we say that Shiva is Advait? Yes, yes. It depends on the darshan that you follow, and depends on your uh, on the reference that you take. Then Mm-hmm. yes, Shiva can be Advait. Okay. I think there's so. If you believe that Mahadev or Shiv is the underpinning reality of all existence, then yes, because that is an Advaita Tattva. Then we're going into Vedant. Okay. I think it will go much deeper. Yes, but thank you. Thank you. Okay. Yes, Shukacharya Ji, before we close this conversation, is there anything that you want to share? Uh, if I have missed asking something or anything that you feel that should, help people? No, I truly do hope that this is a very good beginning, and I do hope that many people are inspired from this discussion to at least go and Yes. follow curiosity. If Yeah. they do have them, of course, they can reach out to you. They can reach out to our Instagram, Yeah. and I'd be more than happy to answer questions. And share whatever I have received with the blessings of my guru, Yeah. and in the hope that it would educate and it would be of use to the viewers. And I thank you very much, Advait ji, Thank you. for hosting this extreme gratitude Vartalam. And Thank you. thank you very much to your viewers. Yeah. Um, Yes, thank you. No, thank you. I think that was the whole agenda of the intention for this conversation to, of course, not only help me, but help all the viewers to at least start thinking about all these concepts, sure. and then the journey is there, right? So, but yes, I really thank you for your time. Thank you for all the knowledge that you shared. Thank you. And with this talk, I invite you again, once again, on this Oh, conversation with the next topic. thank you Uh, very much. yes, please. Thank Thank you. Thank you, you. Shukacharya. Yeah. Bye. Namaste. Bye.